Hello students, today we will discuss about enzyme catalyst, right? So explain enzyme catalyst by giving an example. So enzyme are complex nitrogenous organic compound, right? Means nitrogen containing compound which are produced by, कहाँ पे produce होते हैं? तो कि living plant और animals उसे produce करते हैं, right? And they are actually protein molecules, right, of a high molecular mass and form a colloidal solution in a water, right? वाटर के अंदर वो colloidal solution फॉर्म करते हैं. तो आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज होगा कि what is colloidal solution, right? तो उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, right? They are very effective catalysts. Catalyze numerous reactions, especially those connected with neutral processes. Numerous reactions that occur in the bodies of animals and plants to maintain the life process, right, are catalyzed by an enzyme, right? हमारी जो animals और plants की जो लाइफ प्रोसेस जो मेंटेन हो रही है, राइट, वो मेंटेन क्यों हो रही है? बिकॉज एंजाइम्स उसे कैटालाइज करते हैं, राइट, एंड ड्यू टू दिस रीजन वो मेंटेन होती है. एंड thus the enzyme are turned as a biochemical catalyst, right? और उस टाइम पे एंजाइम टर्न होते हैं बायोकेमिकल कैटालिसिस में एंड द फिनोमिना इज नोन एज अ बायोकेमिकल कैटालिसिस, राइट? जो प्रोसेस लिविंग ऑर्गेनिज्म में होती है लाइक एनिमल एंड प्लांट, राइट, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उस टाइम पे जो एंजाइम यूज करते हैं उसे हम लोग बोलते हैं बायोकेमिकल कैटालिसिस, राइट? Many enzymes have been obtained in a pure crystalline state from a living cell, and however the first enzyme was synthesized, right? Synthesized मतलब कि जो एंजाइम है, राइट, वो एंजाइम लिविंग सेल में ऑब्टेन होते हैं, राइट, लेकिन जो फर्स्ट एंजाइम था तो वो फर्स्ट एंजाइम सिंथेसाइज किया था कहाँ पे? क्योंकि लेबोरेटरी इन 1969. एंड द फ्यू फॉलोइंग are some of the example of a enzyme catalyst reaction, right? So first example is inversion of a cane sugar, right? Cane sugar attached with water converted into glucose and fructose in presence of inverted enzyme, right? So here inverted used as an enzyme, okay? Conversion of glucose into ethyl alcohol, right? So the Zymes enzyme convert glucose into ethyl alcohol and carbon dioxide, right? Here Zymes is used as a enzyme, right? Third, conversion of starch into maltose. When starch attached with water, right, reacts with water, converted into maltose at presence of a Zymes, right, enzyme, right? Conversion of maltose into sugar. So maltose reacts with water, converted into glucose in presence of a maltase enzyme, right? Maltase, starch, diastase, right? Then cane sugar, inverted, right? ये important है, आपको याद रखना है, right? Next, urea तो urease, right? Urea reacts with water and converted into ammonia and carbon dioxide, right? So urease is used as a enzyme, right? Next, in stomach, the pepsin enzyme, right, convert protein into peptides, right? And while in intestine, the pancreatic trypsin, right, convert protein into amino acid by a hydrolysis, right? Hydrolysis means react with water, right? When protein reacts with water in presence of pancreatic trypsin enzyme, it's converted into amino acid, right? And when protein attached with pepsin enzyme, right, so protein converted into peptides, right? In both states, protein is used as a reactant, right? And protein converted into peptide and protein converted into amino acid, right? But enzyme is different, right? दोनों में enzyme different है. When peptide form होता है तो at that time pepsin is used as an enzyme, right? But formation of amino acid, pancreatic trypsin, right, used as an enzyme, right? Conversion of milk into curd, right? So it is an enzymatic reaction, right? And lactobacillus enzyme, right, present in a curd. मतलब कि lactobacillus enzyme क्या करता है? मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करता है. Done?
तो ये था एंजाइम कैटालिस्ट के एग्जाम्पल, राइट। नेक्स्ट, एक्सप्लेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंजाइम कैटालिस्ट। So the characteristic of enzyme catalyst are as below. Most highly effective. One molecule of an enzyme may transfer, right? Enzyme के one molecule 1 million molecule को क्या करते हैं? ट्रांसफर करते हैं, right? Highly specific nature. Each enzyme is specific for a given reaction, right? पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए एंजाइम क्या है? पर्टिकुलर होते हैं। वन कैटालिस्ट कैन नॉट कैटालिस्ट मोर देन वन रिएक्शन। कोई भी एक कैटालिस्ट है या कोई भी वन एंजाइम है, वो दूसरे रिएक्शन के लिए हम लोग यूज नहीं कर सकते, राइट। फॉर एग्जाम्पल यूरेट हाइड्रोलिसिस करता है यूरिया को, राइट। तो फिर हम लोग कैन शुगर के लिए यूरेट का यूज नहीं कर सकते, राइट। For example, the enzyme urate catalyzes the hydrolysis of urea only, right? It does not catalyze hydrolysis of any other amide. कोई भी amide का catalysis के लिए हम लोग उसका यूज नहीं कर सकते, right? Next, highly active under the optimum temperature. पर्टिकुलर जो फिक्स टेम्परेचर होता है वहाँ पे उसकी जो रिएक्टिविटी है ना वो ज्यादा है, राइट। अगर वो ऑप्टिमम टेम्परेचर से अगर टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है या तो फिर इंक्रीज हो जाता है तो उसकी जो एक्टिविटी है, जो रिएक्टिविटी है वो क्या हो जाएगी? लेस हो जाएगी, राइट। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर कितना है? तो कि 310 केल्विन है, राइट। तो हमारी बॉडी में जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है वो कितना है? तो कि 298 to 310 केल्विन, राइट। जब भी हमें फीवर होता है ना तो एट दैट टाइम टेम्परेचर ऑफ आवर बॉडी इज इंक्रीज, राइट। तो उस टाइम पे क्या होता है कि जो एंजाइम होते हैं ना वो पर्टिकुलरली वर्क नहीं करते, इसकी वजह से हम लोग मेडिसिन लेते हैं, राइट। तो वो मेडिसिन उस टाइम पे, राइट, जब हमें फीवर होता है तो वो मेडिसिन हम लोग जो लेते हैं वो एंजाइम के जैसे एक्ट होती है, राइट। हमारे बॉडी में वो एंजाइम के जैसे वर्क करती है। बिकॉज हाई टेम्परेचर है तो एंजाइम की जो एक्टिविटी है, जो उसका जो रिएक्शन है, वो उसकी जो रिएक्टिविटी है वो लेस हो जाती है एंड ड्यू टू दिस रीजन हमें मेडिसिन लेनी पड़ती है, राइट। The rate of the enzyme reaction become maximum, right, at a defined temperature, and this temperature is called optimum temperature. On either side of optimum temperature, the enzyme activity decrease, right? Optimum temperature की other side मतलब कि if temperature increase हो जाता है या तो decrease हो जाता है तो at that time the enzyme activity decrease हो जाती है, right? And the optimum temperature rate for enzymatic activity, right? For body, कोई भी बॉडी बाद में आएगा, लेकिन जो एंजाइमेटिक रिएक्टिविटी है वो कौन से टेम्परेचर पे वो कंप्लीट वर्क करता है? तो कि 298 to 310, राइट। एंड ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर कितना है? 310 है, राइट। हाईली एक्टिव अंडर ऑप्टिमम पीएच, उसकी पीएच भी फिक्स होनी चाहिए, राइट। कितनी पीएच होनी चाहिए? 5 to 7. The pH, the rate of an enzyme catalyst reaction is maximum, right, at the particular pH. जो pH वैल्यू में कोई भी रिएक्शन है, राइट, उसमें जो एंजाइम हम लोग यूज करते हैं उसका जो रेट है वो मैक्सिमम होता है, वो pH को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑप्टिमम pH, एंड विच इज बिटवीन अ pH वैल्यू 5 to 7, right? Increasing activity in presence of activator and coenzyme, right? We know about promoters, right? And poisons. हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में उसके बारे में डिस्कस किया था, राइट। तो प्रमोटर के जैसे ही क्या होते हैं? एक्टिवेटर्स और कोएंजाइम, राइट। The enzymatic activity is increased in the presence of a certain substance, right, known as the coenzyme. It has been observed that when a small non-protein is present along with an enzyme, the catalytic is enhanced considerable, right? मतलब कि अगर कोई भी एंजाइमेटिक रिएक्शन हो रही है, अगर उसमें स्मॉल प्रपोर्शन में भी नॉन प्रोटीन प्रेजेंट है, हम लोगों ने आगे क्या पढ़ा? तो कि प्रोटीन इज यूज एज द एंजाइम, राइट। तो नॉन प्रोटीन में कौन क्या आएगा? तो कि विटामिन, राइट। अगर उसमें स्मॉल अमाउंट में भी विटामिन प्रेजेंट है ना तो उसकी एक्टिविटी है, राइट, जो एंजाइमेटिक एक्टिविटी वो इंक्रीज हो जाएगी। तो उसके लिए हम लोग उसको क्या बोलेंगे? कोएंजाइम बोलेंगे, राइट। सेकंड लास्ट मतलब इन्फ्लुएंस ऑफ इनहिबिटर, राइट, एंड पॉइजन। तो कि लाइक ऑर्डिनरी कैटालिस्ट, एंजाइम आर ऑल्सो इनहिबिट और पॉइजन बाय द प्रेजेंस ऑफ सर्टेन कंपाउंड। मतलब कि वो कंपाउंड क्या करते हैं? रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज कर देते हैं, राइट। एंड द इनहिबिटर और पॉइजन
interact with the active functional group, right, of an enzyme surface and often reduce or completely destroy the catalytic activity of the enzyme, and the use of many drugs is related to their action as the enzyme inhibitor in the body, right. Next, explain the mechanism of enzyme catalyst. तो जो enzyme catalyst है, right, वो work कैसे करते हैं? क्योंकि there are a number of cavities, right, present on the surface of the colloidal particles of enzyme, right. These cavities are of a characteristic shape, right. उसका particular कोई shape होगा and possess active group. वहाँ पे कोई active group भी होंगे like NH2, COOH, SH, OH, etc. And these are actually the active center. और वो center को हम लोग क्या बोलते हैं कि जहाँ पे active group present है उसे हम लोग बोलते हैं active center, right, on the surface of enzyme particle. The molecules of the reactant which have a कॉम्प्लीमेंट्री शेप, अगर हम लोग कोई सब्सटेंस यूज करते हैं तो उसका कोई पर्टिकुलर शेप होता है और वो जो एंजाइम है वो पर्टिकुलर जो कैविटी वाला जो एंजाइम है वो उस रिएक्टेंट में क्या हो जाएगा, लॉक हो जाएगा, जैसे पर्टिकुलर की होती है पर्टिकुलर लॉक के लिए वैसे, राइट. ऑन अकाउंट ऑफ द प्रेजेंस ऑफ एक्टिव ग्रुप एंड एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म, मीन्स इंटरमीडिएट फॉर्म होगा एंड विच देन डिकम्पोज टू यील्ड द प्रोडक्ट, राइट. और वो जो इंटरमीडिएट फॉर्म होगा, जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा, उसका डिकम्पोजिशन होगा, वो ब्रेक होगा और देन हमें क्या मिलेगी, प्रोडक्ट मिलेगी और एंजाइम हमें फ्री फॉर्म में पहले जितना मिल जाएगा, राइट. तो 2 स्टेप की रिएक्शन है. फर्स्ट स्टेप इज बाइंडिंग ऑफ एंजाइम टू सबस्ट्रेट, राइट, टू फॉर्म अ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स. मतलब E means enzyme, S means substrate, means our reactant. Both attach with each other and converted into activated complex में intermediate, right, and then decomposition of activated complex. ये जो activated complex है उसका decomposition हो जाएगा, means वो break हो जाएगा and then converted into product and enzyme means E plus T. Okay. Next, give a information about the utility of a catalyst in a industries, right. जो इंडस्ट्रीज है वहाँ पे हम लोग कैटालिस्ट का कौन सी जगह पे यूज करते हैं, राइट, उसके बारे में हमें लिखना है. तो क्या हेबर प्रोसेस फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एमोनिया, राइट, N2 plus H2 converted into 2NH3, right, and finally divided iron, right. Iron is used as a catalyst and molybdenum is used as a promoter, right, at a 200 bar pressure, at a 723 Kelvin temperature and 200 bar pressure. And nowadays a mixture of iron dioxide, potassium iodide and alumina is used, right. Second example is the Oswald process, right, for the manufacturing of a nitric acid. NH3 plus oxygen gives NO plus 6H2O, right, and NO plus O2 gives NO2. And third reaction, NO2 plus H2O plus O2 converted into HNO3 and platinum asbestos temperature 573 Kelvin. Means platinized asbestos is used as a catalyst, right? And last process is a contact process for the manufacturing of a sulfuric acid, right? And in this method, SO2 attached with HO2 and converted into SO3. This SO3 attached with H2SO4 and converted into oleum, right? And oleum attached with water and converted into H2SO4, right? And platinum asbestos and vanadium pentoxide is used as a catalyst, right? And temperature range is equal to temperature range in between 673 Kelvin to 723 Kelvin. Okay, ये important processes सब आपको आनी चाहिए. Okay, thank you.